So everything I'm teaching you and showing you guys is stuff that I had to learn. और आज जो कुछ मैं आपको सिखाने जा रहा हूं ये मैंने पहले खुद सीखा है. Today's training is pretty basic. It's just a matter of certain questions and responses I went through when I first started. और ये बुनियादी जो है ये ट्रेनिंग है और जो कुछ मुझसे पूछा गया मैं आपको सवालात के कुछ जवाब क्लियर करूंगा. So if you guys are ready for today's training, let me get a round of applause. क्या आप लोग तैयार हैं? You guys can see my screen, correct? Yes, sir. Perfect. Without further ado, let's begin. So some of the common questions people ask me about this water. जो कॉमन क्वेश्चन आम लोगों ने मुझसे जो सवाल पूछे इस पानी के ताल्लुक से वो ये है. I narrowed it down to 6 questions. ये 6 सवालात मैंने नोट किए हैं. Number 1, what is so special about this water? इस पानी के ताल्लुक से स्पेशल क्या है? 2, what makes this water so different? ये कौन सी चीज को मुनफरिद बनाती है? 3, how is this water made? और तीसरा ये है कि ये पानी किससे बना है? 4, where does this water come from? और चौथा कि ये पानी कहां से आता है? 5, I'd like to learn more information about this water. और मैं इस पानी के ताल्लुक से और ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो चाहता हूं. And 6, what kind of filter does it come from? और किस तरह से जो फिल्टर है वो किस तरह से काम करता है, कहां से आता है? For the most part, they're all around the same questions. People just ask it different ways sometimes. ये सवाल यही है लेकिन लोग मुख्तलिफ तरह से पूछते हैं. Just so you could get an idea when you guys are role playing with each other. और लेकिन जवाब मैं आपको सिखाऊंगा. Some of the responses. कुछ जवाब हैं जो यहाँ पर लिखे हैं. I narrowed it down to 8. Here's the first one. पहला जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ. Number 1 would be, this water comes from my medical device. और पहला जवाब ये हो सकता है कि ये पानी एक मेडिकल डिवाइस से आता है, एक दवाई के आलात से आता है. Number 2 would be, this water comes from a machine that's connected to my faucet. और ये पानी जो है ये पानी उस मशीन से आता है जो मेरे नलके पर लगी. पानी सब वो फिल्टर करते थे ना, उसके उस तरह से जो मशीन है वो पानी जुड़ जाती है और वहां से फिर ये पानी आता है. Number 3, I have a medical device at home that makes unlimited amounts of water. फिर मैं तीसरा ये भी कह सकता हूँ कि मेरे पास ऐसी पानी की एक ऐसी मशीन है, दवाई वाली मशीन है जो जिससे मैं बेशुमार तादाद में पानी हासिल कर सकता हूँ. For number 4, usually people think the machine is just a filter. So this is how I reply back. और तो चौथा मैं आपको बताऊंगा, लोग सारी समझते हैं ये एक फिल्टर करने वाली मशीन है. If someone asks you if it's a filter, you would respond, this medical device does have a filter in it. However, it's licensed as a medical device. और हम ये कह सकते हैं कि इस मशीन में फिल्टर तो है लेकिन ये एक लाइसेंस शुदा मुस्तनिद एक दवाई का आला है. When people start to ask you, what's so special about this water? अब लोग आपसे पूछे इस पानी की खासियत क्या है, You would reply,
What makes this water so special is its health properties, such as और antioxidants, tiny water, and alkalization. जो आप इसका बता सकते हैं इसकी खासियत ये है कि इसमें सेहत के ताल्लुक से बहुत सी चीजें हैं। इसमें टाइनी वाटर है, अल्कनाइजेशन है, एंटीऑक्सीडेंट्स, इस पानी के जो अज्जा हैं बहुत ज्यादा सेहत के लिए मुफीद हैं। My apologies for some of the spelling errors. I just noticed it. Number 6, this water will help you detox and reduce inflammation. और ये पानी आपकी मदद करेगा कि आप जिस्म से फाजल मादे निकाल दे। This one actually happened to me when I first started drinking the water. Like number 7, this water gives you mental clarity. और ये पानी आपको ज़हनी तौर पर भी आपको पाक और साफ कर देता है। Again, number 8, same thing what I experienced. When I first started drinking the water, I noticed it helped me hydrate 3 times better than normal water. और नॉर्मल वाटर जो हम आजकल पीते हैं उससे 3 गुना ज्यादा बेहतर है ये पानी कि मेरे अंदर से कीमियाई मादे जो हैं जो फाजल मादे हैं वो उनको मेरे जिस्म से खारिज कर देता है। ठीक है, समझ आ रही? Let's go forward. The next one. manual, just tell the students, I see they're taking notes and I really appreciate that. We're recording this and it will be on our YouTube after I edit it. So they will have all of this. I know they want to write it down, but if they just watch, this will all be on YouTube this week. ओके, अगर आपको जो नहीं लिख रहे और जो सुने जो लिख रहे हैं वो भी ज्यादा ध्यान सुनने पर लगाएं। ये आपको YouTube वीडियोस आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी ग्रुप पे। मैं आपको YouTube का ये लिंक भेज दूंगा, तो फिर आप ज्यादा लिखो ना, बाकी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक दो चीजें है ना वो लिख लो, बाकी जाना ज्यादा सुनो। ओके, यस, गुड। Starting off, this is a lot of information, but please take your time learning it as I did. और इसको वक्त लगाएं, इसको सीखें जैसा मैंने सीखा है, आप भी इसको वक्त लगाकर सीखें। Please be patient with yourself. और लेकिन अपने मतलब आपने बड़ा सब्र करना है, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, बार बार सीखें सब्र के साथ। ऑलराइट, यस, गुड, Awesome. Next one is going to be how to share this water/info with people if I would you method. और आपने इस पानी के ताल्लुक से कैसे मालूमात को फैलाना है, दूसरों के साथ शेयर करना है जिनको आप चाहते हैं कि आप इन्फॉर्मेशन दें। For example, if people are interested in the water or wanting to more information, I narrowed it down to about 5 different responses. और मिसाल के तौर पर अगर कोई आपके पास आए और पानी में इंटरेस्टेड हो तो 5 तरीके हैं आप उनको कैसे आप ज्यादा बेहतर इंफॉर्मेशन आप पहुंचा सकते हैं। Me, been in the business for about 6 years, I still to this day use the same responses. और मुझे जितने साल हो गए काम करते हुए, लेकिन अभी भी मैं यही रिस्पांस यही इस्तेमाल कर रहा हूं। Number 1 would be, you wouldn't be interested in samples in some free samples now, would you? और आप इस तरह से पहला कह सकते हैं कि क्या आप मुफ्त सैंपल चाहते हैं, मैं आपको कुछ मुफ्त सैंपल दे देता हूं। गुड। Number 2, if I shared some gallons with you, would you be open in sampling it? अगर मैं कुछ गैलन पानी आपको दूं तो ये ठीक रहेगा, आपको सैंपल ठीक रहेगा। Good. 3, if you'd like to try it, I can share some gallons with you for free. अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हैं तो कुछ गैलन पानी मैं आपको फ्री पेश कर सकता हूं, चाहिए आपको? गुड। Before I share the water with them,
Number 4 is crucial so you can anticipate how long they'll be on the water for. और इससे पहले कि आप उनको पानी दें, आप इस बात को यकीनी बना लें कि वो कितना ज्यादा इस बात में दिलचस्पी ले रहा है। So I usually let people try the water out for 2 weeks minimum to a month max. By then, they'll feel some type of benefit or detox. मैं 2 हफ्तों का टाइम देता हूं या मैक्सिमम 4 हफ्तों का वक्त देता हूं ताकि वो इस पानी को इस्तेमाल करें और इसका फायदा वो देखेंगे, इसका फायदा क्या है। If people want to learn more about how the water or the machine works, number 5 is a good question for that. और अगर लोग मशीन के बारे में जानना चाहें तो 5वां नंबर उनके लिए बड़ा अच्छा मुफीद है। Which is, if I sent you some information of how the water works, would you be open to checking it out? अगर आप ये जानना चाहते हैं कि पानी कैसे काम करता है तो आपको मैं आपको दिखाने के लिए तैयार हूं। And always, I can't stress this enough. Let your people know they're going to go through a detox and have them anticipate that so that it doesn't catch them off guard when they go through it. लेकिन आपने हमेशा इस बात को यकीनी बनाना, आप लोगों को ये बताना है कि इस पानी के पीने के वसीला से आपके जिस्म से फाजल मादे खारिज हो जाएंगे। ऑलराइट, गुड। Some things I still do to this day is I ask people, have you ever experienced a detox? और इससे पहले मैं लोगों से ये पूछता हूं कि पहले कभी आपने डिटॉक्स जो है वो उसका तजर्बा किया है। The reason I asked this question is so I could see if people have been through a detox or not. मतलब ये है कि मैं लोगों से जानना चाहता हूं कि वो पहले डिटॉक्स के तजर्बे से गुजरे हैं या नहीं। If they haven't, I want to prepare them by letting them know what they will experience feeling wise when they start drinking this water. मतलब ये है कि सिर्फ वे इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि वो इस पानी में कितनी दिलचस्पी ले रहे हैं। Because sometimes, depending on the person, if they're very acidic and they start drinking this very healthy water, their body will experience a change and sometimes makes them feel uncomfortable. मिसाल के तौर पर तेजाबियत है, जिस तरह ये पेट तेजाबियत की वजह बढ़ है, अगर तेजाबियत है आपके जिस्म के अंदर तो पानी पिएंगे तो उससे जो फायदे जो नताइज निकलेंगे उसका तजर्बा करना है। So what I usually do is I give people 9.5 water to see how their body reacts to it first. और मैं लोगों को ये पानी मुफ्त मुहैया करता हूं ताकि वो जाने कि कैसे काम करता है। Based off of that first experience, I'll know to either give them the 9.5 again or lower down the pH. और जो है वो ये पानी पीने से पीएच जो है वो अपनी सतह पर आ रहती है और उसकी वजह से जिस्म से फाजल मादे वो खारिज हो जाते हैं। For example, when I first started drinking the water, I felt the detox immediately. I had a mental clarity. My mom, however, she went through a little harsher detox. और मेरा ज़ाती तौर पर तजर्बा है कि मैंने जब पानी पिया तो मेरा दिमाग बिल्कुल साफ हो गया। बाद दफा मेरी माँ जो है वो वसीले अंदाज में वो रहती थी घर में, लेकिन पानी पीने से वो दिमाग की शफाफियत हो गई। गुड, यस। Again, I share this with you to prepare you for when you drink the water, not to scare you. बताने का मतलब यह है कि आप पानी पिए, डराना आपको मकसद नहीं है कि आप डर जाएं। When my mom started drinking this water, she started throwing up and started having digestive issues. और जब मेरी माँ ने पानी पीना शुरू किया तो फिर उनके अंदर से जो मनफी चीजें थी वो निकलना शुरू हो गई।
So when people go through this kind of experience, for example, like my mother, I was drinking a 9.5 still, but I had to drop the pH down to for her to 7.0. और 9.5 जो है ये पानी की एक वो किस्म है जो हम आगे जब सीखेंगे। कह रहा है कि मैंने वो पानी पीता रहा और हम घर में वही इस्तेमाल करते हुए घर का माहौल बेहतर हो गया। The reason I dropped her down to 7.0 is so her body and mind can get used to it first. और मैं इस पानी को इसलिए इस्तेमाल करता रहा कि पहले मैं जब इस्तेमाल करूं मुझे इसका तजुर्बा हो, फिर मैं आगे पेश करूं। Once you start feeling the difference and start feeling more comfortable, then you could gradually pick up the pH. और इस तरह से जो नॉर्मल पीएच है वो अपनी सतह पर रहेगी। So always, I can't stress this enough. Always let your people know you will go through some kind of a detox. Pay attention to how they feel and get their feedback. जो कस्टमर है उसको तैयार करना है कि वो डिटॉक्स के लिए तैयार रहे। जिस्मानी तब्दीलियां रूनमा होगी। So far, does this all make sense for you guys? और ये आपको बताने का मकसद ये था। Next slide. Practice having these conversations with each other. और एक दूसरे के साथ इस गुफ्तगू की प्रैक्टिस करें। जो कुछ सीख रहे हैं एक दूसरे के साथ आपने प्रैक्टिस करनी। क्या करना है? गुड। The more you memorize and keep practicing these questions and responses, so you become more familiar and confident speaking about the product. आज जितने आपको जवाब लिखे गए थे, आपको जब YouTube पर वीडियो मिल जाएगी, आपको मैं कुछ जो सवालात हैं उनके रिस्पॉन्स हैं, जवाब हैं, वो आपको लिखे हुए मिल जाएंगे। इसकी प्रैक्टिस करते रहें ताकि जब कोई शख्स आपसे पूछे सवाल करे तो फौरन आपके ध्यान में आए और आप उसका जवाब दे दें। ऑलराइट? यस। Just like anything else, the more you practice something, the better you will get. बाकी तमाम चीजों की तरह जितनी ज्यादा आप मशक करेंगे उतनी ज्यादा वो चीज आपके जहन में बैठ जाएगी। ऑलराइट? यस। गुड। Again, it will seem like a lot to memorize at first, but remember, the start point is always the hardest. जब आप इसको जुबानी याद करने की कोशिश करेंगे तो याद रखें कि पहला पॉइंट हमेशा ही मुश्किल होता है ना? मुश्किल होता है, आसान होता है? डिफिकल्ट, यस। The more you repeat these statements, the better you will eventually get, and the better you will have them memorized. जितनी ज्यादा स्टेटमेंट्स को आप दोहराएंगे, जुबानी याद करेंगे, एक दूसरे के साथ मशक करेंगे, उतना ज्यादा ये आपको याद हो जाएगी, आपके जहन में बैठ जाएगी। समझ आ रही है? सो रहे हैं? Yes. जाग रहे हो? Yes. Good. Again, have patience, practice, but more importantly, have fun. और सब्र करें, सब्र से इसको याद करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें और फिर जब उठते बैठते चलते फिरते आप एक दूसरे के साथ बातचीत करते रहना है फन के साथ। ऑलराइट? Yes. Good. Let's move forward. So I thought of some examples that could help you guys role play with each other. और कुछ चीजें हैं जो मैं चाहता हूँ एक दूसरे के साथ आप इसको प्रैक्टिस करते रहें, मच करते रहें। Like it says on the screen, take turns being person A who asks the question and person B who replies. दो लोग बैठे हैं, ये दो लोग बैठे हैं, एक टीम बना लें। एक का नाम है ए और दूसरे का नाम है बी। गुड। For example, the first question, person A would ask, where does this water come from? मिसाल इकरा ये ए है और ये लड़की सना बी है। आप इतना पूछेगी कि ये पानी कहाँ से आता है। ठीक है, पूछो, पूछिए बाद में। गुड।
Person B would reply, this water comes from a medical device that's attached to my faucet at home. और आपका जवाब ये होगा कि ये पानी उस मेडिकल मशीन से आता है जो मेरे घर के नलके पर लगी है। बताओ उसको, बताओ उर्दू का। ये पानी मशीन से आता है जो मेडिकल मशीन। Very good. Person A would ask the question, what's so special about this water? फिर एक ही बारी आ जाएगी, ये पानी, इसमें इस पानी की खासियत क्या है? Person B would reply, what makes this water so special? Is it its properties? It's loaded with antioxidants, it's tiny water, and it's alkalized through electricity. और आपका जवाब होगा कि इसके अज्जा जो हैं वो बहुत ज्यादा सेहत के लिए मुफीद है। इसके जो अज्जा हैं वो टाइनी वाटर है और अल्कनाइज्ड वाटर है और ये इलेक्ट्रिसिटी से ये इसका मारने का काम किया जाता है। ठीक है, करो। पानी से जो अज्जा है वो मुफीद है और इसको इलेक्ट्रिसिटी के है वो दिखाया गया है, ये आपके पीने के लिए। वेरी गुड, शाबाश। Yes, sir. Next question for person A would be, isn't all water the same? और फिर आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि क्या तमाम पानी जो है वो एक जैसा है? Person B would reply, I used to think the same thing until I found out about this water and seen the difference. और आपने कहना है कि हाँ, मैंने ये तजुर्बा किया है कि जितना पानी मैंने पिया है वो उससे मुझे फर्क पड़ा है। मैंने ये तजुर्बा किया है कि जितना पानी मैंने पिया उससे Also, something I teach my team when it comes to answering questions, try not to say a lot. Sorry, come again, this word. Sometimes when we get asked these questions, we have the tendency to say so much more than is needed. I kind of want to emphasize how stick to the basics. Less is more. और मैं जब भी मैं शुरू करता हूँ मेरी यही कोशिश है सिखाऊं लोगों को कि आपने बेसिक पर रहना है। चैप्टर 1 पर ही आपने रहकर आपने लोगों को सिखाना है। So notice how it's a simple question, it gets a simple reply. बहुत ही सादा सवाल है और बहुत ही सादा जवाब है। कोई मुश्किल लगी आपको? Good. I never want to say more than is necessary. और जो चीजें जरूरी थी वो मैंने आपको बताई है। The point of these questions and answers is so that when you answer these questions, you could pique their interest in wanting to learn more. और आप मकसद ये है कि आप इन सवालात और जवाबात को खूब याद करें ताकि ये आपके जहन में बैठ जाए। This is a technique I like to call you're mirroring the person's conversation. और इस टेक्निक को मैं ये कहता हूं कि आपको अगले बंदे की ज़हनियत का पता चल जाता है। इंग्लिश में मिररिंग, कि आपको शीशा हो जाता है, उसकी ज़हन सोच साफ हो जाती है। Overall, you give them the amount of energy and effort they give you. और जितनी ज्यादा एनर्जी, जितनी ज्यादा तमन्नाई, जितनी ज्यादा एफर्ट आप करेंगे उतना ज्यादा आपको फल मिलेगा। This has personally helped me a lot in this business, learning this concept. मुझे जाती तौर पर इसका बहुत फायदा हुआ। Some more questions. कुछ और सवाल? Question A, how was this water made? और आपने फिर पूछना है ये पानी किससे बना है? ये पानी किससे बना? The answer would be, I have a medical device at home that filters out all the harmful chemicals in your tap water, then remineralizes it through electricity.
और फिर हम ये कह सकते हैं कि मेरे घर पर एक ऐसी मशीन है जो मेरे घर के नलके पर लगी है, जो बिजली से सारे जो गंदे जो है मादे हैं उनको पानी से निकाल देती है। The next question, what do you mean by tiny water? और अगला सवाल आप पूछ सकते हैं कि टाइनी वाटर से क्या मुराद है। You could use this answer for people that feel bloated with water or don't feel hydrated when they're drinking water. और ये आपने हाइड्रेट वाटर के लिए भी यही लफ्ज इस्तेमाल करना है। The answer would be this water is called tiny water because it has smaller water clusters, about 4 to 6. और आपने कहना ये पानी टाइनी वाटर इसलिए कहलाता है कि इसमें जो पानी के अज्जा हैं वो बहुत छोटी मिकदार में है, 4 से 6। Which makes it easier for your body to absorb, unlike other waters that have 12 to 6 clusters in them. और बाकी पानी जो है उसमें 12 से 16 क्लस्टर्स हैं, इसमें 4 से 6 क्लस्टर। ओके, व्हाट इज अ क्लस्टर? Water cluster are basically how many molecules are in a water cluster as it is. या थैंक यू। और आपने कह रहे हैं पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो बाकी पानियों में 12 से 6 मॉलिक्यूल हैं और इसमें 4 से 6। ठीक है, हाइड्रोजन मतलब H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का और 2 हाइड्रोजन का, एक और के H2O हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल मिलकर पानी बना है। अब उस पानी के जो मॉलिक्यूल हैं और नॉर्मल पानी के वो 12 से 16 है जो हम पीते हैं, लेकिन इस पानी के मॉलिक्यूल जो है वो 4 से गुड। That's why we feel bloated, because usually any kind of water that's not ours has 12 to 6 clusters in the water. Ours has 4 to 6. और ये जो है इसमें इस पानी में 4 से 6 मॉलिक्यूल हैं और ये हमें आज में बड़ी मदद देते हैं। मैंने जो कहा था उसको बोलो ठहर लो तो चलाएंगे। It's a lot of information to obtain, but again, the more you go over it, the better you'll comprehend it. और जितना ज्यादा आप एक दूसरे के साथ इसको दोहराएंगे, मशक करेंगे, उतना ज्यादा ये आपके लिए आसान होता जाएगा। ओके, यस, गुड। Let's move forward. And last but not least, again, remember to keep practicing this and have fun learning this. Thank you, and I hope you enjoyed this training. और आपने प्रैक्टिस करते रहना है, मशक करते रहना है और एंजॉय करते रहना है। Thank you. Amen. Thank you, David. Mhm. All right. Now, class, a few things, Emmanuel, real quickly, okay? जल्दी से मैं आपको 2 कुछ चीजें सिखाना चाहूंगा, गौर करें। Just remember that our body is made up of trillions and trillions of cells. The cells in our body are very small, but our body is made of cells. और हम जानते हैं कि हमारे जिस्म में लाखों करोड़ों की तादाद में सेल्स हैं। याद पता आपको? Yes. Good. And what David was saying about the clusters is that the hydrogen and the oxygen, the molecules, they're able to penetrate into our cells much better than like hard water. और जिस तरह आम पानी जो है उसके अंदर मॉलिक्यूल जो है वो उसकी निस्बत ये जो पानी हम इस्तेमाल करेंगे वो ज्यादा बेहतर तौर पर हमारे अंदर काम करेगा और जो सेल्स हैं वो बेहतर तौर पर काम करेंगे। Alright? Yes. Good. Which is one of the reasons about when you mentioned detox, the water goes through our whole body, it penetrates our whole body and cleans it. इसका मतलब यह है कि पानी हमारे जिस्म में जाता है और हमारे जिस्म को वो
साफ कर देता है। Now, what he was sharing is what you're going to do locally. लोकली आपने क्या करना, गौर करें, ये बोतल जो है इस तरह से हमने बनाकर हमने बेच दी। See, when we have the water at your location there in Kasur, that's where we, as a business, we give the water away. The water by itself is the best selling tool we have, is the water itself. और जो बेहतरीन जो सेलिंग जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो पानी है, जो दुनिया का बेहतरीन तोहफा है। And we're going to create strategies, and you're working on it. Some of you may know restaurant owners. Some of you may know doctors who have a doctor's office, or nurses. Some of you may have business owners that you can go to, and you give the water away where they can ultimately buy their own machines. और आप में से बहुत से लोग डॉक्टर्स को जानते हैं, बिजनेसमैन को जानते हो, पैनर्स डिनर्स आप जानते हो, बहुत से लोग आप जानते हो का भाव आपका है। किसी को हम पानी बेच सकते हैं और किसी को हम मशीन बेच सकते हैं। आमेन। Amen. Good. And still, we're going to be selling the water locally, and we start by giving it away. और फिर अभी हमने पानी से स्टार्ट करा, फिर मुफ्त पहले पानी बनता है, ठीक है? पहले तुसी मुफ्त पियोगे। Amen. Amen. Like you can't go to, you want to buy a motorbike, you go to the motorbike and the owner says, okay, take it for a whole month for free, drive it everywhere. That doesn't happen. और अगर फर्ज करें आप बाइक से बाइक खरीदने जाएं, तो क्या वो कहते हैं कि भाई एक महीना पूरा तुसी जाओ ते बरत लो फिर बाद होता है या नहीं? So you understand. So we're going to start by giving away to start making people feel healthy. And so, amen. That's what we do for the Lord. All right.